Good morning, friends. Myself Kanish Kala, and first and foremost, I would like to welcome all my pharma fraternity members. मेरे पूरे फार्मा परिवार का मैं इस मंच पर स्वागत करता हूं और सर्वप्रथम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे इस प्रयास को एक पॉजिटिव वे में सपोर्ट किया और आशा करता हूं कि भविष्य में भी वो इस एफर्ट को सपोर्ट करेंगे और अपने इंटरवेंशंस और अपने आइडियाज़ मुझसे शेयर करेंगे ताकि हम एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म बना पाए. So friends, I have done my pharmacy from clinical pharmacy domain, and during the journey of my clinical pharmacy मैंने ये पाया कि जो हमारी करंट सर्कुलेटिंग बुक्स हैं उसमें हमारा सिलेबस में इतना कंटेंट हमें बुक्स में नहीं मिल पाता कि हम एक अच्छा कंटेंट अपने एग्ज़ाम्स में डिलीवर कर पाएँ, जिसके कारण जो हमारे इवेल्यूशन होते हैं या मार्क्स होते हैं वो उस लेवल के नहीं आ पाते जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं. सो हमारा ओवरऑल परसेंटेज जो होता है वो उस लेवल का नहीं आ पाता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं. तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए मैंने एक एफर्ट किया जिसमें मैंने पीसीआई द्वारा जो सिलेबस हमारा फ्रेम्ड है उसको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करते हुए आपके लिए पीपीटी बनाना शुरू किया. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं फार्मा प्रैक्टिस के एरियाज़ में, चाहे वो क्लिनिकल फार्मेसी हो, हॉस्पिटल फार्मेसी हो, कम्युनिटी फार्मेसी हो या फार्म डी हो, तो उनको एक ओवरव्यू मिल पाए कि हमें सिलेबस में कौन सी चीज़ में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं. ये जो स्लाइड है ये इसका छठा एफर्ट है जिसमें हम हीमोविजिलेंस जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे. सो आई वेलकम यू ऑल एंड आई टेक यू टू द जर्नी ऑफ hemovigilance with the aspect of clinical pharmacy and the importance of hemovigilance in patient safety in clinical pharmacy. So let's move on to the presentation. So let's start the journey of hemovigilance. Here we will start our journey with a background slide in which we have divided the slide into two sections. पहला है हमारा बैकग्राउंड जो कि डील करेगा कि कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन इन प्रिमिटिव स्टेज कब हुआ, और एक आएगा हमारा इंट्रोडक्शन जो डील करेगा हीमोविजिलेंस का इंट्रोडक्शन और इवोल्यूशन. सो गोइंग थ्रू द बैकग्राउंड, initially the concept of blood transfusion was initiated in 17th century when the humans were transfused with the blood of animals for almost all type of ailments. This practice had a negative outcome, so in the 18th century the French king legally banned the transfusion of animal blood to a human. Then the next improvement or intervention in the line of blood transfusion emerged in 19th century when the concept of human blood transfusions emerged, and those interventions also had a negative and fatal outcome. Later it was improved with the development of ABO system and cross-matching procedure, which ultimately made the blood transfusion a risky zone towards a life-saving procedure. Now coming to the modern introduction of hemovigilance. Actually, the basic concept of hemovigilance is to provide the access to the quality assured blood and blood components which could ultimately help to save the patient in acute emergencies. If used in an appropriate way, the blood transfusion can be a life-saving modality. So the concept of safe blood transfusion initiated in 1980s in the modern concept. In 1990, the transfusion related complications like HIV and hepatitis emerged in patients of hemophilia in the regions like USA, UK, France, Canada and Japan. This negative outcome called for an emergent need for a transfusion process surveillance system development, and lately in the present it is known as
Haemovigilance. Ideally, the word haemovigilance was coined in France in the year 1990, and it has a similar goal which is synonymous to the pharmacovigilance. Hence, it is a part or a subsection of a pharmacovigilance activity which deals with the blood components and all the procedures which are done in the handling of blood or blood components. So ideally the word Hemovigilance is taken from the Greek word hema, which means blood, and a Latin word vigilance, which means being watchful. Now, in this slide, we will discuss the origin and development of the hemovigilance. As per the origin, the initial step was taken in France, and a system of hemovigilance was developed by French blood agency, which lately was framed as a national system of surveillance which could alert in the blood collection and the related process of blood collection and its follow-up. Until the year 1994, a monitoring system along with a blood transfusion committee was also established. So it was the major breakthrough in the development of hemovigilance, and later developments were taken from other regions around the world, in which comes the European Council, which initiated a resolution for blood safety in the year 1995 with the aim of improving the public confidence in the safe blood supply. Further, in the year 1988, the European Hemovigilance Network was formed. At present, on the global level, International Hemovigilance Network is functional in the blood safety sector. The objective of International Hemovigilance Network is concerned with the safety of blood, its components, and the transfusion medicines used during the process of hemovigilance in the global scenario. The International Hemovigilance Network is working with collaboration of International Society of Blood Transfusion to provide and sustain better and safe blood services. Now coming to the definition part of hemovigilance. Ideally, the hemovigilance is defined as a set of surveillance procedures covering the whole transfusion chain from collection of blood, its components, to the follow-up of the recipients, which are intended to collect and assess the information on the adverse effects resulting from the use of blood products and to prevent their occurrence or recurrence. So if we go through the background of hemovigilance, it is a part of pharmacovigilance which monitors the safety aspects of any drug or any substance which is used in a therapeutic way. Here with the hemovigilance, the blood is concerned, so the core element is the vigilance of blood and its products. There are various regions where the hemovigilance program is being implemented. It is implemented both in developed as well as developing nations, and few of the details for the hemovigilance programs which are being implemented on the global level are as under. In UK, the Serious Hazards of Transfusion short program is being implemented. In Netherlands, transfusion reaction in patients known as TRIP is implemented. In Canada, transfusion transmitted injuries surveillance system TTISS is being implemented. And coming to the Indian scenario, in India, the hemovigilance program of India is being implemented for
monitoring the hemovigilance activities in the Indian scenario. पिछली स्लाइड में हमने हीमोविजिलेंस का ग्लोबल एस्पेक्ट देखा. इस स्लाइड में हम हीमोविजिलेंस के एस्पेक्ट इंडियन सिनेरियो में देखेंगे. सो इन इंडिया हीमोविजिलेंस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 10th December 2012. It was launched collaboratively by IPC, Indian Pharmacopoeia Commission, and the National Institute of Biologicals. It is a centralized, well-structured program for monitoring of adverse reactions associated with transfusion of blood and the administration procedures. Ideally, there were different phases in which the hemovigilance program was initiated. So, the progress of the hemovigilance program in India has been divided into 3 phases, which are known as the initiation phase, the expansion and consolidation phase, the expansion and the maintenance phase. So in the initiation phase, which started from 2012 and continued till 2013, the main aim was the development of system, process and procedures, and initiating the enrollment of the various hospitals or various healthcare centers to develop the hemovigilance in Indian scenario. The second phase was the expansion consolidation phase, which was during the 2013 to 15. In this, enrollment was done, workshops, trainings, and newsletters regarding the hemovigilance awareness and acceptability enhancement was done. Now the next phase emerged in the year 2015 and was continued till the 2017. This was known as the expansion maintenance phase, where the main goal was to maintain the continuity of the development of hemovigilance, optimization of the progress and the performance, as well as to identify the gaps and plan and intervene to remove the gaps and to progress ahead for the development of hemovigilance program in India. Apart from this, there were responsible stakeholders which were the cornerstones to develop the hemovigilance program in India, which included a 5-member expert subgroup committee, a core committee, a national advisory committee, a signal review panel, a quality panel, and a training panel. So इस स्लाइड में हमने इंडियन सिनेरियो में हीमोविजिलेंस का जो प्रोग्रेस है वो देखा कि हीमोविजिलेंस जो था वो हमारा 10th December 2012 में लॉन्च हुआ, जो कि कोलैबोरेटिवली लॉन्च हुआ आईपीसी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल के एफर्ट्स से, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस के रूप में इम्प्लीमेंट हुआ, जिसका मेन एम था एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड रिलेटेड प्रोसेस को मॉनिटर करना. द हीमोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया: इनिशिएशन फेज, एक्सपेंशन फेज, एक्सपेंशन मेंटेनेंस फेज, जिसमें अलग अलग तरह की प्रोसेस को किया गया. इनिशिएशन फेज में फोकस था आपका डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस, सिस्टम एंड प्रोसीजर और इनरोलमेंट को इंक्रीज करना. एक्सपेंशन फेज में था कि इनरोलमेंट को इंक्रीज करते हुए वर्कशॉप और ट्रेनिंग्स और न्यूज़ लेटर्स करना ताकि अवेयरनेस बढ़े और एक्सपैंड हो पाए प्रोग्राम. और एक्सपेंशन फेज को मेंटेन करने के लिए अगला फेज आया एक्सपेंशन मेंटेनेंस फेज, जिसमें मेंटेन हो सके वो स्टेप्स लिए गए, ऑप्टिमाइजेशन किया गया, आपकी फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज़ का गैप आइडेंटिफिकेशन किए गए और उनको रिमूव करने के लिए मैनेजरल प्लानिंग करी गई. इन सब एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए और हीमोविजिलेंस को सही तरीके से चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स और पिलर्स थे आपके 5 एक्सपर्ट कमिटी सब ग्रुप्स, कोर कमिटी, नेशनल एडवाइजरी कमिटी,
सिग्नल रिव्यू पैनल, क्वालिटी पैनल और ट्रेनिंग पैनल, जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हीमो विजिलेंस प्रोग्राम को चाहिए थे उनके कंप्लायंस को पूरा करने के लिए इन स्टेक होल्डर्स के सब ग्रुप्स और कमिटीज को बनाया गया था और उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया, जिसके कारण एक हीमो विजिलेंस प्रोग्राम डेवलप हो पाया इंडियन सिनेरियो। Now we will discuss the hemovigilance activity process. So for the hemovigilance activity, a software hemovigil is developed as well as a form is also developed for collection and reporting of the data all over the India in the hemovigilance program. The hemovigilance program of India became a part of International Hemovigilance Network in the year December 2014. The objectives of reporting adverse reaction in the National Hemovigilance Program were as under. The first was to monitor the blood transfusion reaction, create awareness among the healthcare professionals, generate evidence-based medicine data, advise the Central Drug Standard Control Organization for regulatory decisions regarding blood and its use, communicate the finding to the all stakeholders, and create national and international collaborations and contacts. Currently in India, 154 centers have been enrolled in the program. The centers include a wide variety of health facilities which covers nursing homes, private hospitals, teaching hospitals, and medical colleges. As per the activity flow, the data from the medical colleges or the centers in case of any adverse reaction is reported in form or via online software, and the details are documented. The details which are documented as per the format of transfusion reaction reporting form, which is known as TRRF, and the form is sent to the National Coordination Center at NIB through the Hemovigil software. The recommendation on the basis of the collected data are forwarded to the National Coordinating Center IPC for the further communication to the Drug Controller General of India CDSCO. The main objective is to ultimately frame a safe and effective guideline to ensure the patient's safety as well as to enhance the utilization of the blood as it is a valuable resource. So the safety regulatory guidelines are formulated and modified from time to time by CDSCO based on the data inputs or from the information which is received from TRRF via software, and which is implemented for the benefit of the patients and for enhancing the treatment protocols or the treatment guidelines which could be followed by the healthcare professionals. So hemovigilance जो एक्टिविटी है वो इंडियन सिनेरियो में हीमोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया के थ्रू की जाती है, जो कि एक प्रोग्राम था जो 2012 में इम्प्लीमेंट हुआ और 2014 में ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी ऐड ऑन हुआ, जो कि इंटरनेशनल हीमोविजिलेंस नेटवर्क का एक पार्ट बना ये। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को मॉनिटर करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अवेयरनेस डेवलप करना और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जनरेट करना, और जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है CDSCO उसको हेल्प आउट करना कि वो रेगुलेटरी और ट्रीटमेंट रिलेटेड गाइडलाइंस बनाए ताकि पेशेंट सेफ्टी कल्चर इन्हेंस हो पाए, और सारी फाइंडिंग्स को ये की स्टेक होल्डर्स से शेयर करे ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो फॉर द पेशेंट गुड एज वेल एज टू इन्हेंस द पेशेंट सेफ्टी कल्चर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि आप नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएं।
अभी करेंटली 154 सेंटर्स जो हैं वो इंडिया में इनरोल्ड हैं इस एक्टिविटी के लिए और इस हीमोविजिलेंस प्रोग्राम में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स हैं, जैसे आपकी नर्सिंग होम हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, टीचिंग हॉस्पिटल हो गए। इनमें क्या होता है कि जो भी डाटा ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन या ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे एडवर्स रिएक्शन अगर हो जाती है, उस डाटा को फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है, उसको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट करते हुए फॉरवर्ड किया जाता है आपके नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो कि एनआईबी है। उसको एनआईबी एसेस करने के बाद आईपीसी को वो डाटा सेंड करता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। आईपीसी जो है उस कम्युनिकेशन को एसेस करता है, उस इंफॉर्मेशन को एसेस करता है और उसको आगे भेजता है डीसीजीएस को, जो कि हमारी है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो फिर सीडीएससीओ पे डाटा जाता है इनके थ्रू, और इसके थ्रू इतनी तरीके से ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके जाती है और अल्टीमेटली एक रेगुलेटरी गाइडलाइन बनाने के लिए ये इंफॉर्मेशन यूज़ होती है कि ताकि एक सेफ्टी कल्चर डेवलप हो पाए पेशेंट्स के लिए हीमोविजिलेंस के अंतर्गत, जिसको हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फॉलो भी करें ताकि हमारा पेशेंट को जो है बेनिफिट मैक्सिमम हो पाए और उनका रिस्क मिनिमम हो पाए। हीमोविजिलेंस एक्टिविटी की कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए आईपीसी और एनआईबी द्वारा एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट डेवलप किया गया है, जिसमें कई आपके पैरामीटर्स हैं जिनको डिफाइन किया गया है, जो कि वाइटल हैं इस एक्टिविटी को स्टैंडर्डाइज प्रोसेस में कवर करने के लिए। सो द गाइडेंस डॉक्यूमेंट कंटेन्स द डिटेल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन of the hemovigilance activity, which includes the enrollment aspects in which the different institutions which could be enrolled are described. Objectives of the reporting is described. Hemovigilance software and its functioning is described. The details regarding privacy and security of data, documentation reporting of data details, responsibility of the enrolled centers, responsibility of medical and nursing staff, responsibilities of hospital transfusion committee, responsibility of National Institute of Biologicals CDSCO, other protocols and the different forms to be implemented in the hemovigilance activity are described. On the right hand side, the major form which is used for the implementation of the hemovigilance activity is known as the transfusion reaction reporting form, which is known as TRRF. It is a single page form which is divided into 6 sections which contain the different details. So first section contains the patient information details, second section contains the transfusion information details, third section contains the details on the nature of adverse reactions, fourth section contains the details on the outcome of adverse reaction, fifth section contains the detail of the reporter for the confidentiality, for the authenticity of the filled form, and the last but not the least, the last section contains the causality assessment, which completes the outcome as well as the decision making aspect of the hemovigilance activity. Now, after completing the reporting from either form or through Vigiflow, the assessment of reports is done, and basically few type of assessment or reports have been generated in the hemovigilance software in the Indian scenario or on the global scale, few of which are as under the type of reactions which were reported in the hemovigilance system included the febrile non-hemolytic transfusion reactions, hemolytic transfusion reactions, transfusion associated dyspnea, transfusion associated circulatory load, and transfusion associated graft versus host disease.
So with this, the overview of hemovigilance completes। और ये जो हमारा सेक्शन था, इसने हमारा जो हमारी पीसीआई का कोर्स था उसके सेकंड पार्ट का एक सब सेक्शन जो कि हीमोविजिलेंस था, जो कि फार्माकोविजिलेंस का एक पार्ट है, उसे कंप्लीट किया है। राइट हैंड साइड में आपके लिए रेफरेंसेस हैं पेपर्स, जिनको पढ़ के या इस स्लाइड को पढ़ के आप अपनी रूटीन बुक से ऐड ऑन करके अपने लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार कर सकते हैं सेक्शन वाइज, और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये एफर्ट आपके कुछ काम आए और आपको हेल्प आउट करे अच्छे नोट्स बनाने के लिए, अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए। अगर किसी को क्लिनिकल फार्मेसी में स्टार्टिंग में या स्टार्ट से पीसीआई द्वारा जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग सिमिलर पीपीटीज को गो थ्रू करना है, तो मैंने हर सेक्शन वाइज पीपीटीज बना रखी हैं, राइट फ्रॉम ओरिजिन डेवलपमेंट, जिसमें मैंने पहला सेक्शन दूसरा सेक्शन कवर कर रखा है, डीआईसी कवर कर रखा है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का करता हूँ कि आपने बहुत सपोर्ट किया। With this, I sign off and thank you to every pharmacy member and every pharmacy fraternity member for supporting this noble cause। और आशा करता हूँ आगे भी आप इसको सपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम अगला एलिमेंट करेंगे फार्माको विजिलेंस और उससे रिलेटेड मटेरियल विजिलेंस फर्दर, ताकि हमारा जो कोर्स है पीसीआई का वो पूरा हो पाए टॉपिक वाइज। विद दिस, थैंक यू, प्रणाम, धन्यवाद।